Hello everyone, welcome to Trick Clubs. Recently, some vacancies are announced in different Army public schools in India. So, first vacancy is from Army Public School Bangalore, and these vacancies are on ad hoc basis, that is for one session only. And the vacancy is of these subjects like TGT English, TGT Hindi, TGT Science, TGT Social Science, TGT Computer Science. So, one seat is there on each of these subject and qualification like graduation, so you should be graduate with minimum 50% marks, and B.Ed degree is mandatory. In B.Ed also 50% is mandatory, then only you can apply if you have 50% both in graduation as well as in B.Ed. For TGT computer science, B.Ed is not mandatory. And age criteria, so for if you are fresh candidates, so if your age is below 40 years, then you are eligible to apply if you are fresh candidates. For experienced candidate, like your age is above 40 and below 57 years, then they require minimum 5 years of teaching experience in the last 10 years. For assistant librarian, one seat is there, and B.Lib science or graduate diploma in library science is required. Next is eligibility. Computer literacy is mandatory for all the post. So just like you have some basic knowledge of MS Word, Excel or PowerPoint. And for serial number 1 preference, they will give preference to CSB or OST and CTET or TET exam passed candidate. So if like what is this CSB or OST? So every year AWES, Army Welfare Education Society, conduct one exam, and that exam is known as CSB or OST exam. So once you pass that exam, they will give you a scorecard just like a CTET. So that scorecard is known as OST scorecard, and for TGT, CTET paper 2. So CTET paper 2 you have 90 marks. So they required 90 marks. So if you have these both these like OST scorecard and CTET 90 marks in paper 2, then you are given some preference. C point is selection process through interview only for shortlisted candidate. And once you send all these your form and everything, then they will shortlist you for interview, and they will inform you by email and through call that your interview is scheduled on this date. Next is like how to apply. So you have to download the application form from the school website. I will also share this application form on my Telegram ID, so you can download from there also. Telegram link is in the description of this video. And so first thing is you have to fill this form, application form properly. After that, enclose a demand draft of rupees 250. So you have to make a DD, that is demand draft, in favor of Army Public School, that is Bangalore. And next is all your like submit filled in application form superscribed on the envelope mentioning the post applied. So you have to mention on the envelope like on which for which post you are applying, and for application for LSB May 2025 for the post of this. So you have to mention like you are applying for TGT English or your subjects. So each and everything you should mention on the envelope. Next, you have to send all these documents by courier or speed post on this address like to the principal, RB Public School, K Kamraj Road, Bangalore, and this is the pin code. And your application should reach before 5th on or before 5th July 2025. They have also given one contact number. If you have any query, you can also call on this number for that. And one more thing, so on DD, on the back side of DD, you should write your name, father's name, and the subject for which you are applying. Also, you have to send all your 10th
12 graduation, post graduation mark sheet, semester wise. If you have post graduation, then you can also send that mark sheet. CSB, OST scorecard if you have, and you have to send these mark sheet, self attested mark sheet, like just write self attested at the bottom and put your signature on the xerox of this form. So you have to send all these to the school address, so they will shortlist on the basis of your marks or and the qualification. And if you have any extra like experience certificate or teaching experience, then you can also attach it and receive. They will shortlist and give you call for the interview. सो सेकेंड वैकेंसी जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल से है, और ये भी एक कैजुअल बेसिस पे है। यहाँ पे क्लियर लिख रखा है, एप्लीकेशंस फॉर एंटीसिपेटेड वैकेंसी फॉर द सेशन 2025-26 इन आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल ऑन कैजुअल बेसिस आर इनवाइटेड। तो यहाँ पे ये रख रखा है कि 25 जुलाई से लेके आपका दिसंबर 25 तक ये जॉब रहेगा। तो ये सब सब्जेक्ट्स है टीजीटी इंग्लिश, और यहाँ पे कंसोलिडेटेड सैलरी लिख रखा है 29,680। और इसके लिए भी क्या चाहिए आपका टीजीटी के लिए, तो आपके पास या तो बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन कर रखे हो इंग्लिश में जिसमें आपका 50% नंबर हो, या मास्टर डिग्री हो जिसमें 50% नंबर हो, और आपके पास बीएड होना चाहिए। फिर हिंदी के लिए भी वही आपका ग्रेजुएशन कर रखे हैं हिंदी से और उसमें आपके 50% नंबर, और आपके पास बीएड होना चाहिए। इसके बाद से पीआरटी के लिए बीसीए होना चाहिए, या बीसीए है या आपके पास क्या हो, ग्रेजुएशन कर रखे हो कंप्यूटर साइंस में, या बीटेक कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस में, एंड बीएड या एमएड। तो यहाँ पे ये बीएड और एमएड भी, क्योंकि एंड में लिखा गया है, तो बीएड एमएड में से आपके पास होना ही है मतलब कि। और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट ए लेवल कोर्स फॉर डोएक, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे एंड बीएड एमएड। तो आप ग्रेजुएशन यानी सब्जेक्ट और या ए लेवल कोर्स डोएक से कर रखे हैं, और बीएड एमएड में से आपका कोई भी एक है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ मैंडेटरी, और इंग्लिश में आपको मतलब फ्लुएंसी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर बीएड और परस्यूइंग बीएड इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर ऑल द पोस्ट। तो जो लोग अभी बीएड परस्यू कर रहे हैं और जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं इन सब पोस्ट के लिए। नो, और डिसीजन ऑफ इंटरव्यू पैनल विल बी फाइनल अवॉइडिंग लास्ट डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर इंटरव्यू टिल, जो लास्ट डेट इसका एक्सटेंड कर दिया गया है इंटरव्यू के लिए 5 जुलाई 2025 तक आपका इंटरव्यू एपीएस भोपाल में ही होगा। कैंडिडेट शुड कैरी ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपना लेके जाना है वहाँ पे, अलॉन्ग विथ सीवी, फोटो कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और बाकी जो स्कूल का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उनका मोबाइल नंबर है, तो इस पर भी आप कॉल करके जो भी क्वायरी होगा तो वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।